Good evening, dear kids. Today I am taking you exercise 22b, problem number 1, which says from the following figure you have to find y sine x and the equation, the expression given. You have to find the values. Now from the following figure y कैसे find करना है? This is your third side. So you know very well two sides are given to you. If I name them as a, b, c, so by Pythagoras theorem you will get the value of y. Shall we try it out? Yes. So it will go hypotenuse square, this is your a, this is your b, and this is your c. So ac square is equal to ab square plus bc square. So that will go for 2 square is equal to ab square you have to find, and bc square is given as 1 square. So that will be 4 is equal to ab square plus 1. So that will be ab square is equal to 4 minus 1, that is ab is root of 3. So you got the value of y as root of 3. So your first answer is done. Next you have to find sine x. Sine of x degree. What will be sine? Sine we know it is perpendicular upon hypotenuse. X degree के opposite जो रहेगा वो उसका perpendicular होगा. So AB will be the perpendicular and the hypotenuse is AC. So your answer is root 3 upon 2. Got my point? Similarly you have to find sec s. Sec मतलब hypotenuse upon base. तो आपको x डिग्री के hypotenuse और base लेना है. So that will be sec x will be hypotenuse upon base, that will be 2 upon 1. Then you have to find tan x. So tan x will be perpendicular upon base, that is root 3 upon 1, and it is minus sign in between. So you have to add both of them. You can also use the identity. If it is given sec x degree minus tan x degree in one bracket, and in another bracket we have sec x degree plus tan x degree, so you can use sec x square plus minus tan x square, that is a minus b plus a plus b. So we have the identity a square minus b square. You can use the identities, put in the values and get the answer. We will jump on to problem number 2, which says you have been given the figure and you have to find sine of x degree. So your sine of x degree, this one. Then you have to find cos of y degree and you have to solve this equation. Let's start. If you want to find sine of x degree, so x degree sine is always perpendicular upon hypotenuse. So considering the bigger triangle, this is your perpendicular and this is your hypotenuse. So your answer is 8 upon 17. What about cos y? For your cos y, my dear kids, you will be needing base and the hypotenuse of y degree. Now here this is y. This is y. So you have to go in the smaller triangle. But for the smaller triangle, you do not have the hypotenuse. So you have to first find the hypotenuse. So in this triangle, you have to use the Pythagoras theorem and find the hypotenuse. How you will find the hypotenuse, my dear kids? It will be 8 square plus 6 square will be your hypotenuse square. Got my point clear? So from there, you will get the value of your hypotenuse. Let me check what name it is. They have not given the name. Okay, we will name it as ABC. So this is your A, this is your A, this is your B, this is your C, and this is your D. So here it will be AC square is equal to AB square plus BC square. So from there you will get the value of AC. Once you got the value of AC, that means आपके पास ये आ गया. अब आप छोटे triangle में you can use, you have to find y degree, cos of y degree. That means cos of y degree is based upon hypotenuse. Your base is 6 and hypotenuse आपके Pythagoras से यहाँ से आया है, वो वाला यहाँ पे लिखना है. So hypotenuse you will be getting 15, I guess. So you have to write 6 upon 15. Let me check hypotenuse, I guess not 15, it will be 10. So you have to write 10. 6 upon 10 you can further reduce. So you will get 3 upon 5. Now third equation you have to find tan x, that is perpendicular upon base. So perpendicular is x के हिसाब से perpendicular 8 है और उसका base ये पूरा है. But you do not have the entire thing. How you will find that entire thing? So you will have to go in bigger triangle also. You have to go the Pythagoras theorem, and from Pythagoras you have to find BD. Are you getting my point? How you will use the Pythagoras theorem? It will be AD square is equal to AB square plus BD square. AD square is given as 17 the whole square is equal to AB is 8 the whole square. From there you will get the value of your base. From there you will get the value of BD as 15. Now you can use the base as 15 for the bigger triangle. Got my point clear? Similarly you have to go for sine y, cos y, put in the values and solve this equation.
Next we have in triangle ABC, AB, if I draw something like this, it is given AB is equal to AC and they both are 15 centimeters, and BC is given as 18 centimeters. Yes, my dear kids, do you know that if I draw a perpendicular from this vertex in an isosceles triangle, the property says that it divides the base in two equal halves. That means this will become 9, this will become 9, and this is 15. So if I want to go by Pythagoras theorem in this triangle, this is 90 degree. So hypotenuse is AB. If I name this as D, so it will be AB square is equal to AD square plus BD square. Am I correct? From there, my dear kids, if I put 15 square is equal to AD, I have to find, and BD is 9 square. From there I'll get the value of AD. Once I got the value of AD, what I have to find? Let's see. Find cos angle ABC. ABC. उसका cos बताना है, तो how you will find cos angle ABC? ABC मतलब ABD. It's one and the same thing. सो डोंट गेट कन्फ्यूज कि ए बी सी और ए बी डी में क्या फ़र्क है. ए बी सी अगर एंगल बोला या ए बी डी बोला, इट्स द फुल फॉर्म. ए बी डी बोलो या ए बी सी बोलो, एंगल तो बी ही रहेगा ना. तो एंगल बी का आपको कॉस बताना है, एंड कॉस इज व्हाट? इट इज़ कॉस ऑफ एंगल बी विल बी बेस अपॉन hypotenuse. Base is what, my dear kids? It is 9. Hypotenuse is what? 15. If you want to reduce it, you have to keep your answer in your reduced form. Clear? Next will be, we have in figure below, it is given an isosceles triangle ABC, and we do not have a, okay, we have a base. Again same problem, very similar problem to your previous one. You have to find this value of this. ठीक है, वो फिर से isosceles triangle, and from there if I am drawing a perpendicular to BC, it will divide the BC in two equal halves. So this will be 4, this will be 4. Clear? So now in this triangle, if you go for Pythagoras, you will get the value of AD. I'll put this as D. AD you will get as 3 centimeter. Once you got AD, my dear kids, now you will go for sin B. They have given to find sin B. Sin B मतलब ये B के हिसाब से, sin होता है perpendicular upon hypotenuse. So sin B will be perpendicular upon hypotenuse, that is AD upon AB, that is 3 upon 5. Then they have asked for tan C. Tan C, look at the angle C और उसका perpendicular upon base. तो angle C का perpendicular AD है और base है DC. So that will be 3 upon 4. Am I correct? So you got these two. Similarly, you have to go for sin square B. So sin B find करो, फिर उसका square कर दो. What was sin B? 3 upon 5. तो 3 upon 5 का square कर दो. What is cos B? Cos B मतलब B के हिसाब से cos होता है base upon hypotenuse. So that will be 4 upon 5. उसका square कर दो और दोनों को add कर दो. So how to write it? I'll tell you. So that will be sin square B plus cos square C. So you have to write sin square B is 3 upon 5 the whole square, cos square C is 4 upon 5 the whole square. You have to open this, so it will be something like this. So your answer will be 25 upon 25, that is 1. In this equation, your next equation, you have to find tan C minus cot B. पहले tan C की वैल्यू फाइंड करो, cot B की वैल्यू फाइंड करो और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करो. tan C minus cot B. tan C के हिसाब से अगर आप देखोगे तो tan होता है perpendicular upon base. So that will be AD upon DC. And what is cot B? Cot B के हिसाब से, सो कम ऑन दिस साइड, जिस एंगल के हिसाब से दिया है उसका परपेंडिकुलर उसका बेस लेना है. यहाँ पे अभी कॉट B बोला है, तो कॉट इज व्हाट? इट इज उल्टा ऑफ tan. दैट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो B के हिसाब से बेस कौन सा है? इट इज़ BD. एंड परपेंडिकुलर कौन सा है? इट इज़ AD. Got my point clear? You have to just put in the values, that is 3 upon 4 minus 4 upon 3. Take the LCM and get the value of your this equation. Clear? Next we have in triangle ABC, angle B is 90. So something like this, if I put it ABC, angle CAB is X. CAB, can I keep this? CAB is X. Okay. Tan X.
tan of x is given as 3/4. Now tan of x means perpendicular upon base is given as 3/4. तो x के हिसाब से उसका perpendicular BC है, so it is given as 3x, and उसका base perpendicular upon base, उसका base है ये, तो ये बन गया 4x, and from there you will get the value of AC as 5x by Pythagoras if you want to go. Okay, now it is said that tan x is given as like this and BC की वैल्यू दी हुई है 15. माय डियर किड्स, BC आपके हिसाब से 3x है, तो 3x की वैल्यू आपको 15 दी हुई है, तो फ्रॉम देयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 5. Am I correct with this? Okay, once you got the value of x, you have to put it into you have to find AB and AC. तो AB है 4x, तो 4 into 5 that is 20, and BC has 3x, that is 3 into 5 that is 15. Got my point clear? Next we have, using the measurements given in the figure, find the value of sin phi. ये इसको हम लोग बोलते हैं phi. ओके, एंड दिस इज़ योर थीटा. ओके, साइन फी मतलब यहाँ पे है और ये आपका थीटा है. क्लियर? फाइंड वैल्यू ऑफ साइन फी एंड टेन थीटा. साइन फी, इसका साइन निकालना है. So how you will get the sine of this? You don't have 90 degree in this triangle, and as I said you, all the trigonometrical ratio will go into 90 degree only. So you have to take the construction, draw perpendicular here so that this becomes 90 degree. Now you have a triangle this. इसमें साइन देखोगे, अगर मैं इसको ई दे रही हूँ तो साइन होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. सो साइन थीटा के हिसाब से वी वांट टू गो फॉर साइन फी. आई एम सॉरी, इसका टेन बनाना है, टेन थीटा, और इसका साइन निकालना है, साइन फी. नाउ साइन फी के हिसाब से दिस इज योर परपेंडिकुलर and this is your hypotenuse, but perpendicular is missing. So by Pythagoras theorem, in this triangle you have to get the perpendicular, that is BD square is equal to BC square plus DC square. From there you will get the value of DC. Got my point clear? So once you got the DC, I guess you will be getting it as 5. So once you got DC, now you can go for sin phi. Sin phi is perpendicular upon hypotenuse. तो sin phi मतलब इसके हिसाब से इसका perpendicular होगा DC और इसका hypotenuse होगा BD. That will be 5/13. Clear? Okay. Then we have tan theta. मतलब यहाँ पे आपको फाइंड करना है इसका tan थीटा. tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, दैट इज ED. सो tan थीटा में हम लोग लिखेंगे ED अपॉन AE. गेटिंग माई पॉइंट? बोथ आर मिसिंग. सो हाउ वी विल फाइंड इट आउट? लेट्स सी. नाउ दिस इज 5, DC is 5, so can I say EB also 5 because the rectangles opposite sides are equal, and this is 12, BC is 12, so can I say ED as 12? Okay, then further we have this entire is given as 14. So AB is given as 14. You got EB as 5. So what will be remaining? AE will be what? 9. So you got AE as 9. What about ED? ED is not in your hands. ED you got. ED is equal to BC. ED is equal to BC, that is 12. So you got this. You can reduce this in table of 3. You will get 4:3. So you got tan theta. Got my point clear? So you got this. So the only thing is you have to use more of Pythagoras, and you have to understand all the ratios concept, according to which angle we are taking which side. So perpendicular, base and hypotenuse should be clear. Hypotenuse is always same. You don't need to worry about the hypotenuse. So any side opposite your 90 degree is known as hypotenuse. But it depends on which angle you are using, so that the base and the perpendicular will keep on changing. अगर एंगल बी के कंसेप्ट से देख रहे हो, हिसाब से देख रहे हो, तो परपेंडिकुलर अलग होगा, और अगर एंगल ए के हिसाब से देख रहे हो तो परपेंडिकुलर अलग होगा. सो यू हैव टू टेक इन दोज पॉइंट्स इनटू कंसिडरेशन. ओके, नेक्स्ट इट इज से राइट एन एक्सप्रेशन फॉर AD इन टर्म्स ऑफ थीटा. नाउ AD इन टर्म्स ऑफ थीटा, सो हाउ यू विल राइट इट? लेट्स सी. ओके, लेट मी जस्ट रब दिस. So your next is you have to write an expression for AD in terms of theta. अगर हम लोग जा रहे हैं इन ट्रायंगल AED, ठीक है, AD इन टर्म्स ऑफ थीटा लेना है, तो AD आपका हाइपोटेन्यूस है. यू कैन गो फॉर साइन थीटा. साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. सो परपेंडिकुलर ऑफ थीटा इज ED and hypotenuse is AD and sin theta.
So if you cross multiply, you will get AD into sine theta is equal to ED. You have to keep your AD here, and that will be ED upon sine theta. So that means you have the value of ED in hand, that is 12, I guess. So you can write it like this also, express in terms of sine theta. So you got this. In your next, we have been given that BC is given as 15 and sine B value is given as 4 upon 5. See, look at this, BC is given as 15. साइन बी, तो बी के हिसाब से परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया हुआ है 4x और 5x. गॉट माई पॉइंट क्लियर. अगर पाइथागोरस से इसमें जाएंगे तो यू विल गेट बी सी एज 3x. लेकिन बी सी आपको पाइथागोरस से 3x आएगा, बट बी सी की वैल्यू क्या दी हुई है 15. सो फ्रॉम देयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 15 upon 3, दैट इज 5. So once you got the value of x as 5, you have to put it in this and this. So it will be 5 into 5, that is 25, and this will be 4 into 5, that is 20. So you got AC as 20 and AB as 25, and your BC is given as 15. Got my point clear? Now they have said calculate AB and BC. We have already calculated. Next it is said, so first point is clear? Yes. Next it is said, now if 10 ADC is 1, calculate measures of CD and AD. 10 ADC, एंगल ADC कहाँ है? तो यहाँ पे है ADC. तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 10 निकालना है, 10 थीटा मतलब 10 एंगल D निकालना है. तो वो होता है हम लोग का परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो D के पॉइंट ऑफ व्यू से परपेंडिकुलर कौन है? AC, और उसका बेस कौन है? CD. तो आप लिखोगे AC अपॉन CD. गॉट माई पॉइंट क्लियर? सो अभी 10 ADC की वैल्यू दी हुई है, 10 एंगल D की वैल्यू दी हुई है 1. सो दैट विल बी इक्वेटेड. सो लिखने का तरीका ऐसे हो जाएगा, आई शो यू. यू विल राइट 10 एंगल ADC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट 10 एंगल ADC की वैल्यू दी हुई है 1. सो इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर हम लोग का है AC एंड BC इज CD इज द बेस. So if I cross multiply, I'll get AC is equal to CD. ठीक है? So you got AC is equal to CD. And further, you have the value of AC, I guess. Yes, AC value is 20. So CD also you got 20. Clear? Next we have if sine plus cosec A is equal to 2, and you have to find this. You have learnt in your expansion chapter, if A upon A plus B is given as 3, you have to find A plus A square plus B square. Similarly, we will use the property here and find it out. Let's see how well we can do. Sine A plus cosec A is given as 2. So you have to find the value of this, sine square A plus cosec square A. For that, what you will do, squaring both sides. So once I do squaring both sides, it will be sine A plus cosec A the whole square is equal to 2 the whole square. Got my point? This you have to open with the expansion with the identity A plus B the whole square, and that will be sine square A plus cosec square A plus 2 into sine A into cosec A is equal to 4. Correct? Correct till here? Sine square A plus cosec square A की वैल्यू चाहिए, तो I'll just keep it sine square A plus cosec square A as it is, plus 2 into sin A. Sin A is the reciprocal of cosec A. So can I write 1 upon cosec A? sin A की जगह पे मैंने 1 upon cosec A लिखा, और ये cosec A को मैं नीचे ले आई, तो ये आपस में कट हो गए, इज इक्वल टू 4. नाउ माय डियर किड्स, sin square A plus cosec square A plus 2 is equal to 4. Take this 2 on this side, so it will be sine square A plus cosec square A is equal to 4 minus 2, that is 2. So you got the value of sine square A plus cosec square A is equal to 2. The only concept here you have to understand that मैंने आपको बताया है, कुछ चीज़ें आपको बताई है, जैसे साइन है वो कोसेक का ऑपोजिट है, तो इंस्टेड ऑफ साइन यू कैन राइट 1 अपॉन कोसेक A, और जो हम लोग का कॉस है वो सेक का ऑपोजिट है, सो यू कैन राइट इट समथिंग लाइक दिस, एंड जो कॉट है दैट इज tan का ऑपोजिट, सो you can write it 1 upon tan A. Clear? So instead of, in this equation, instead of sin A, I wrote 1 upon cosec A. तो वहाँ से cosec A कट हो गया. Clear? Is that clear? Next we have
we'll just put it. It is given 4 sin theta is equal to 3 cos theta. My dear kids, sin theta, keep it here. This cos theta, bring it down here in division. Keep 3 here and take this 4 down. So you got sin upon cos theta is equal to 3 upon 4. Do you know what is sin upon cos? It is tan theta. So value of tan theta is given to you. Yes, remember sin upon cos is equal to tan theta. And cos upon sine is equal to cot theta. Some things, yes, you have to now come up to the identities. Next chapter is completely with your identities of trigonometrical ratios. So few points you have to remember in this. पहले मैंने आपको बताया रेसिप्रोकल वाला पॉइंट प्रीवियस प्रॉब्लम में कि साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक, कॉस इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक एंड सिमिलरली योर टेन इज रेसिप्रोकल ऑफ योर कॉट. तो उसी तरीके से अब एक और न्यू पॉइंट है कि टेन जो रेशियो है वो बना है साइन अपॉन कॉस से और जो कॉट रेशियो है वो बना है कॉस अपॉन साइन से. क्लियर? सो अगर मैंने आपको दिया साइन अपॉन कॉस इज 3 अपॉन 4. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कैन आई डायरेक्टली राइट टेन थीटा बिकॉज आई हैव गिवन यू दिस. ओके, सो टेन थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई. तो अब आप कोई भी ट्रायंगल बनाएंगे और उस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से टेन देखेंगे तो दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर विल बी 3x एंड बेस विल बी 4x. फ्रॉम देयर यू विल फाइंड द हाइपोटेन्यूज. वंस यू गॉट 3 साइड्स इन योर प्रॉब्लम विल बी ईजी बिकॉज एवरीथिंग यू हैव टू फाइंड विथ कंसेप्ट ऑफ थीटा. और ये थीटा है तो थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको साइन थीटा फाइंड करना है, कॉस थीटा फाइंड करना है. देन यू हैव इक्वेशन कॉट स्क्वायर एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड देन यू हैव एन एक्सप्रेशन. यू कैन फाइंड द वैल्यूज, पुट इन द वैल्यूज इन योर एक्सप्रेशंस एंड फाइंड द आंसर्स. नेक्स्ट आई हैव very similar problems. Now you don't have to worry. See, next is your 13th problem which says 17 cos theta is equal to 15. So what will be cos theta? Cos theta will be 15 upon 17. सेम प्रॉब्लम्स. आपको ट्रायंगल बनाना है. ये अगर थीटा है तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस क्या होगा? इट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. सो बेस इज गिवन 15x, हाइपोटेन्यूस इज गिवन 17x. दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. सो बेस इज 15, हाइपोटेन्यूस इज 17. एंड फ्रॉम दिस you have to use the Pythagoras and find the value of AB. My dear kids, be very sure Pythagoras is what? AC square is equal to AB square plus BC square. Hypotenuse square is equal to first side square plus second side square. Got my point? Once you put in the values, now you have to find tan theta. जैसे ही आपके पास 3 साइड आ जाते हैं the problem becomes very easy. अब tan theta कैसे फाइंड करोगे? tan theta is perpendicular upon hypotenuse. sec theta कैसे फाइंड करोगे? तो sec थीटा भी आपको आता है बिकॉज sec इज ऑपोजिट ऑफ cos. cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो sec हो गया हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस. तो जैसे जैसे आप, ये आपका हाइपोटेन्यूस है थीटा के हिसाब से, ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है. यू हैव टू जस्ट पुट इन द वैल्यूज एंड गेट द थिंग्स डन. क्लियर? ओके, इन दिस प्रॉब्लम नंबर 14 ऑल्सो इज देयर. लेट्स सी व्हाट इट सेज. 14 says 5 cos A minus 12 sin A is equal to 0. My dear kids, पहले तो ये 12 sin A को इधर ले जाओ. So it will be 5 cos A is equal to 12 sin A. अब आप cos A को यहीं पे रखो. Keep your cos A on this side. Take sin A here into division. 12 को उधर रखो, इस 5 को इधर ले जाओ. तो आपका एक फ्रैक्शन आ गया कॉस अपॉन साइन. अगर आपने प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि कॉस अपॉन साइन को हम लोग लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन को हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा. क्लियर? तो उसी तरीके से अब आपको वो चीज़ यूज़ करनी है एंड यू हैव टू राइट कॉस अपॉन साइन एज कॉट थीटा इज गिवन, कॉट ए इज गिवन टू यू 12 अपॉन 15, 12 अपॉन 5. अब एक ट्रायंगल बनाओ, इसको ए डालो, इसको बी, इसको सी. नाउ एज पर ए कॉट, कॉट क्या होता है? कॉट होता है टेन का ऑपोजिट. टेन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट विल बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर. सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो बेस की वैल्यू 12 दी हुई है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 दी हुई है. सो विच इज़ द बेस? दिस इज द बेस. सो 12. एंड विच इज़ द परपेंडिकुलर? दिस इज द परपेंडिकुलर. सो इट इज़ 5. सो यू हैव टू पुट 12x and 5x. From there, by Pythagoras, you have to find the hypotenuse square. Once you got that, you have all the 3 sides in your hand and you have to solve this equation. Is that clear? Yes, my dear kids, is that clear? Okay, I'll stop it here. God bless. If you have any doubt, you can message me.